Good morning everyone, I am Diksha Bajaj. Today we are going to discuss about the mechanism of missile formation. So basically what is missile? It is aggregation of ions or molecules having a lyophobic and the lyophilic parts. Lyophobic means which are liquid repelling, while the lyophilic part means which is the liquid attracting molecule or loving molecule. So these are basically ions which are directed outside, and lyophobic part is directed inwards towards that of a dirt or a grease which is inside. So when a sodium stearate is dissolved in water, so what is sodium stearate? That is a soap. So when sodium soap is dissolved in water, it gives the sodium ions which are directed outwards and a negative addendum which is placed here, that is C17H35Cu, because we are talking about sodium stearate. So what is sodium stearate? It is C17H35COONA. So this is a sodium stearate. It is a soap. Now when we are going to dissolve in water, it is going to dissociate to form C17H35COO negative and Na positive. So this is called as stearate ion, right? So these associate to form a ionic missile. So these associate to form a ionic missile. Missile means it is a aggregation of soap around the dirt or a grease. So basically it has two components. So one is your non-polar, this part, and one is your polar, that is a negative and the positive addendum which is directed outwards. So it consists of two parts, that is non-polar, which is directed with this line. That is a long chain hydrocarbon that is called as non-polar tail. While being a non-polar or a hydrocarbon chain, it is going to be insoluble in water. Why? Because it is not polar in nature and it is soluble in water. If something is insoluble in water, it would be soluble in oil. And this is also called as water repelling or a hydrophobic part, means which is going to be water repelling, जो water के करीब नहीं जाएगी, water से दूर जाएगी. That's why it is directed inwards. So the second one is polar group, which is consisting of the negative and the positive ions. It contains a carboxylate ion, that is COO negative at the end. As is in the stearate ions, it is having COO negative carboxylate ion at the end, right? And the polar ionic head, that is a positive part at the last. So it is soluble in water. If something is polar, that is having a separation of charge, that would be soluble in water and it would be insoluble in the oil. As a vice versa here, if something is insoluble in water, it would be soluble in oil, and here it is a soluble in water, so it is insoluble in oil because it is having a polar end and oil is a non-polar. So water attracting, or it is called as hydrophilic part. What does hydrophilic means? That it is towards the water, it will go towards the water, so it is directed towards the end of a soap. So this is a basic structure of a soap. For the simplicity, we can represent the hydrophobic part by a hydrocarbon chain and the polar part, that is a hydrophilic, this part of a negative carboxylate ion, and a sodium positive, that is a polar head, that is a hydrophilic part. So the stearate ions are therefore present on the surface with their carboxylate groups in the water and the hydrocarbon chain staying away from it and remains at the surface. So inside water, these have a unique orientation, keeps the hydrocarbon portion out of water because it is a water repelling, and the negative and the positive part is water attracting. So it is towards outside, or it forms a exterior part of hydrocarbon chain. So this formation is called as missile formation, and the aggregate thus formed is called as ionic missile. This aggregate of the hydrophilic and the hydrophobic part together forms a ionic missile to it. Some examples of soaps are, sodium palmitate and sodium lauryl sulfate. So what is basic formula of it? It is going to be obtained from a palm acid, right? That's why the formula is going to be C15H31COONA.
while sodium lauryl sulfate is CH3, CH2, 11, SO3, O negative and A positive. There are many more examples of soaps, that is cetyl trimethyl ammonium bromide. So basically what does it mean? It is consisting of hydrophobic and the hydrophilic chain, or we can say a lyophobic and the lyophilic part, which is associated with that of a soap particle. Now we are going to discuss about the cleansing action of soap. चलो आज हम आपको कपड़े धोना सिखाएं. हमारे कपड़े के ऊपर कोई दाग है, कोई ऑयल का या कोई ग्रीस का, उसके आसपास सोप पार्टिकल एग्रीगेट करेंगे. What does it mean? They are going to aggregate around the soap or a grease. And how we are going to wash these clothes? अगर हम नॉर्मल घर की बात करें तो हम भिगो कर रखते हैं किसी भी कपड़े को. जब हम भिगो कर रखते हैं तो जो ऑयल पार्टिकल के आसपास सोप पार्टिकल, डिटर्जेंट पार्टिकल, दे गेट एग्रीगेट अराउंड इट. जब वो एग्रीगेट हो जाएंगे तो हम उसको हिलाते हैं मशीन के द्वारा. जब मशीन में वो हिलेगा तो इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड विद अ जर्क. नाउ आफ्टर बीइंग वॉश्ड फ्रॉम द मशीन, वी आर गोइंग टू टेक इट आउट द क्लॉथ फ्रॉम द मशीन. देन वी आर गोइंग टू पुट इनटू वाटर एंड वाटर. हम उसको पानी से निकालेंगे तो क्या देखेंगे कि जब हम उसे झटका लगाकर पानी से निकालेंगे, जो सोप पार्टिकल है they will break that oil particle into parts. जब हम उसे जर्क प्रोवाइड करेंगे तो ऑयल को छोटे छोटे हिस्से टूट जाएंगे एंड दे विल गेट डिजॉल्व इन दैट ऑफ अ वाटर. जो पानी है वो गंदा हो जाएगा और हमारा कपड़ा साफ हो जाएगा. सो क्लॉथ हैविंग अ ऑयल एंड अ ग्रीस पार्टिकल, दैट वुड बी द सेंटर पॉइंट. सो व्हेन द क्लॉथ इज डिप्ड इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोप, डर्ट कम इन कॉन्टैक्ट, राइट. सो जब हम इसको भी डालेंगे किसी सोप में तो वो सोप पार्टिकल ऑयल के कांटेक्ट में आ जाएंगे. हाइड्रोफोबिक पार्ट दे आर गोइंग टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इनसाइड, और हाइड्रोफिलिक पार्ट्स दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स आउटसाइड, और दे आर गोइंग टू बी प्रोजेक्टेड आउट. एज द पोलर ग्रुप्स, राइट, as the polar groups interact with water while the oil drop is surrounded by stearate ions, these are negative addendums which are present inside, they would be pulled in water. These soap particles are going to hold those oil particles together, and as we're going to provide a jerk to the surface, the oil particles, they will disintegrate themselves and will dissolve into the clean water, and the water would be dirty. At the case, the cloth will be cleaned. So the dirt particle is going to be removed and pulled in that of a water. The similar charges repel each other. The oil drop breaks to form a small droplets. These disperse in the water, forming an emulsion, and when the dirty cloth is agitated, it causes a dispersion of oil through the soap. So let us discuss. So basically, when the cloth having a oil or a grease particle is in contact with that of a soap, then the cloth is dipped in aqueous solution of soap. The dirt in contact will form a missile. The soap will form a missile around the oil as a hydrophobic and the hydrophilic part. The polar groups interact with water while the oil, being hydrophobic, is surrounded by the stearate ions, which is having a hydrophobic tail. As similar charges repel each other, this is oil and this is a non-polar, and similarly this a non-polar. They are going to repel each other. So the oil drops are going to break to form a small droplets. ये टूट जाएंगे छोटे छोटे particles में. So these dispersed in water, forming emulsions. Now we know when the dispersed phase and dispersion medium both are liquids, that is called as emulsion. So they are going to be dispersed in water, forming the emulsions. So when the dirty cloth is agitated. Now जब आप किसी भी क्लोथ को बार बार पानी से निकालोगे तो वो सोप पार्टिकल से, जो ये ऑयल पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुए थे, they are going to be agitated, they are going to get a jerk, and they are going to be washed away with that of a soap. So this causes a dispersion of oil through the soap water having a washed away. Hence the dirt or oil is removed from the surface and आपको एक अच्छा साफ सुथरा कपड़ा आपको ऑब्टेन हो जाएगा.
So this is basically the mechanism of cleansing action, how the working of soap particles, how they're going to aggregate together to forming a missile, and how they're going to cleanse a action and of soap. चलो आज हम बात करते हैं कैसे एक चक्की काम करती है। आपको सबको चक्की के बारे में तो पता होगा। चक्की का मतलब है जहां आप गेहूं पिसवाने जाते हैं। सो वो क्या होता है, यहाँ हमने गेहूं डाली, वो एक रोटेटर बेल्ट से गुजरी जिसमें वो पार्टिकल्स को छोटे छोटे पीसेस में कट कर देगी। सो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो इस चक्की, सबने सुना हो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, सो एग्जैक्टली वही हम आज डिस्कस करेंगे। सस्पेंशन को डालेंगे, बड़े पार्टिकल्स को डालेंगे और कोलाइडल रेंज पार्टिकल्स में ऑब्टेन करके किसी कोर्स मटेरियल में, आटे के फॉर्म में, ठीक है, गेहूं का आटे के फॉर्म में हम उसे ऑब्टेन कर लेंगे। So this is a preparation of soles. So this is the first one, that is a mechanical dispersion. Mechanical means through any kind of machine or through any kind of working mechanism. So how we are going to get the particles of a higher size into lower size. So larger particles, they are a part of a suspension. They are broken into smaller pieces. The substance is grounded to a coarse particle. आटे के फॉर्म में हम ऑब्टेन कर लेंगे, उसे डिस्पर्शन मीडियम के साथ मिक्स करेंगे और हमें सस्पेंशन ऑब्टेन हो जाएगा। उसे हम ग्राइंड करेंगे एक कोलाइडल मिल में। मिल होता है, चक्की इज अ मिल, राइट। सो वो मेटल डिस्क 7000 रोटेशंस पर मिनट की रफ्तार से वो रोटेट करेगा एंड दे विल गिव अ पार्टिकल साइज ऑफ कोलाइडल साइज। जो हमें ऑब्टेन होगा आटा, वो कोलाइडल साइज की फॉर्म में होगा। पर ये हम डिस्कस आटे की बात नहीं कर रहे हैं, but we have to prepare the soles. Soles is a part of a colloid, so we have to obtain the particle size which is of colloidal range, and we have to put a larger size particle. So basically what is this? The substance is grounded to the coarse particle. It is then mixed with the dispersion medium to get a suspension. The suspension is then grinded in a colloidal mill. It consists of two metallic plates which are, you can see in this picture, right? So these consist of two metallic discs nearly touching each other and rotating in opposite direction. ये इस तरह रोटेट करेगा 7000 रोटेशन पर मिनट की तरह, ताकि हमारे जो पार्टिकल साइज हैं, जो बड़े पार्टिकल के साइज हैं, वो कोर्स पार्टिकल में ऑब्टेन हो जाएं और हमें ऑब्टेन हो जाएं कुछ साइज ऑफ पार्टिकल, दैट इज इंक, पेन्स, डाइज which are obtained by this methods. Now we are going to discuss about how the electrical dispersion works. So now we are going to discuss about the second method, that is by electrical dispersion, or it is called as Briggs arc method. So what is the method basically? You have the two electrodes जिनको आप कोलाइडल साइज में बनाना चाहते हो. They have to be provided with a arc or electric arc which is dispersed in a dispersion medium as a water, being cooled by the ice itself which is surrounding that water surface. जब हम किसी चीज़ को electric arc provide करेंगे, they are going to generate a lot of heat and that has to be cooled so that हम जो metal को vaporize कर रहे हैं उन्हें हम क्या कर सकें, liquefy कर सकें. जो चीज़ वेपर बनेगी वो लिक्विड बन जाएगी जब उसको हम ठंडा करेंगे, जैसे कि आइस को वेपराइज किया तो स्टीम बन गई. अगर स्टीम को हम ठंडा करेंगे तो दोबारा क्या बन जाएगी, दैट विल फॉर्म अ लिक्विड वाटर और इट विल फॉर्म मोर कूलिंग विद दैट ऑफ अ आइस. सो व्हाट इज बेसिकली द मेथड जिसको हम प्रिपेयर करना चाहते हैं एज अ सोल, जैसे कि प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया और गोल्ड हो गया. So the metal whose soul is to be prepared is made the two electrodes. उनको हम electrode में रख देंगे and when it is dispersed in a dispersion medium as that of a water, it is being cooled by the ice itself. The electric arc is stuck between the electrodes and the heat generated during that would be used, that will vaporize those metals जिसको हम बना रहे हैं, so which will condense immediately in liquid to form a colloidal solution. ये दोबारा colloidal solution ही बन जाएगा. जो बड़े पार्टिकल हैं वो छोटे पार्टिकल में बना रहे हैं. पीछे भी हमने यही किया, एक सस्पेंशन को colloidal range पार्टिकल में बनाया और यहाँ भी हम यही कर रहे हैं. एक सस्पेंशन, अ काइंड ऑफ वेरी सॉलिड सर्फेस ऑफ मेटल को हम क्या बना रहे हैं, colloidal range पार्टिकल्स में ऑब्टेन कर रहे हैं. सो टू गिव अ
colloidal solution. The colloidal solution is stabilized by adding small amount of KH. We want it to be stabilized, right? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अगर stabilization आओ तो फिर फायदा नहीं है. So हम उसको stabilize करेंगे किससे? कुछ amount of KH डालकर. So this is the method of Predigat method. We are just converting in all cases the particles of larger size or larger diameter into smaller size of a colloidal diameter. चाहे वो एक डिस्पोजन मीडियम बाय द मैकेनिकल डिस्पोजन हो, चक्की पड़ी थी, और क्या हो सकता है, इट कैन बी अ Predigat method. So now we're going to discuss about the third method, that is bipeptization. This is one of the most important question of the board exam. So what is peptization? It is a process of converting a freshly prepared PPT or precipitate into colloidal form. Because हम क्या कर रहे हैं, हम बड़े particles को colloidal range particles में convert करने की कोशिश कर रहे हैं by addition of suitable electrolyte. Here we are going to use a electrolyte. First of all, you should be knowing what is electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट होता है जैसे कि NaCl. जब हम उसको पानी में डिजोल्व करें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दे, मतलब जब सेपरेशन ऑफ चार्ज होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे. सो अब हमने करना क्या है, जरा ध्यान से सुनो. सो यू हैव अ PPT ऑफ FeOH. सो व्हाट इज इट? इट इज अ प्रेसिपिटेट. भाई प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक इनसॉल्युबल मास होता है भाई. किसी के ऊपर जो इनसॉल्युबल मास ऑफ सॉलिड अगर एग्रीगेट हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज PPT, precipitate. And similarly when we are going to add electrolyte, भर ध्यान क्या देखना है हमने कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए, it should be of same charge as that of a precipitate which is obtained. So you have an electrolyte of Fe3 positive which is a positive, and this addendum is also a positive. When they are going to have a same charges, they are going to repel each other, right? So ये उनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी, टोट, ये कोई लड़ाई होगी. तो जब लड़ाई होगी उनमें तो भाई छोटे छोटे हिस्सों में राज्य बन जाएंगे. उसी तरह हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल छोटे छोटे बन जाएंगे. ठीक है जी. सो हमारे पास प्रेसिपिटेट क्या था, एक सॉलिड इन एग्रीगेट बड़ा भाई मास था. उसको हम जब इलेक्ट्रोलाइट से तोड़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डाला हमने, FeCl3, राइट. तो Fe दोनों सेम है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों की वैलेंसी सेम है. तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को लड़ाई करेंगे, रिपल्शन होगी, छोटे छोटे हिस्सों में बन जाएंगे, एंड हमें क्या ऑब्टेन हो जाएंगे, कोलाइडल रेंज पार्टिकल्स ऑब्टेन हो जाएंगे. ठीक है जी. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT इनटू कोलाइडल फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट. हमने कुछ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाला और हमने कन्वर्ट कर दिया एक प्रिपेयर्ड PPT को, राइट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक कोलाइडल रेंज पार्टिकल में. इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन, एंड द इलेक्ट्रोलाइट यूज इज कॉल्ड एज पेप्टाइजिंग एजेंट कहा जाता है. So let us now discuss about the cause of peptization. क्या हुआ है, when an electrolyte is added to a freshly prepared PPT, the suitable ions from the electrolyte are adsorbed on the surface of PPT. वो उसके ऊपर adsorb हो जाएंगे. The charged particles, they are going to repel each other and form a colloidal solution, right? They are going to form a colloidal solution. For example, treating a precipitate of Iron-3 oxide with that of a colloidal solution, right? So it forms a FeCl3 solution that forms a reddish brown colored colloidal solution. तो हमारे पास क्या बनेंगे, एक colloidal range particles बन जाएंगे जिनका साइज क्या है, बहुत छोटा है. उसी तरह हम अगर मैं बात करूं कोई और एग्जांपल की, जब मेरे पास सिल्वर क्लोराइड एस PPT हो, हमारे पास क्या है, AgCl है, राइट. तो उसको हम जब Ag पॉजिटिव के साथ करेंगे कंबाइन, भाई दोनों सेम चार्जेस हैं, दिस इज गोइंग टू रिपेल ईच अदर. जब रिपेल करेंगे तो हमारे पास PPT बन जाएगी, कोलाइडल रेंज पार्टिकल्स बन जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे, किसके, इन दोनों का एग्रीगेशन के. सो दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर एंड फॉर्म्स अ व्हाट, कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास बना देंगे. सो ये हमारे पास है पेप्टाइजेशन. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बोर्ड एग्जाम, डिफाइन पेप्टाइजेशन. होपफुली आपको आज का हमारा टॉपिक समझ आया होगा. सो now we are going to discuss, tomorrow we are going to discuss about purification of colloidal solution.